एक बहुत मेहनती लड़का है सोहन। वह जिम इत्यादि भी जाता है। सोहन इज स्ट्रॉन्ग। इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज is, that is and this verb is not the verb of action। मतलब ये इससे कार्य नहीं हो रहा है। So we can say that this verb is telling what the subject is। अर्थात सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये नहीं बता रहा है। वर्ब ऑफ एक्शन मीन्स वर्ब के द्वारा काम किया जा रहा हो, उसको कहा जाता है वर्ब ऑफ एक्शन। इसी प्रकार देखिए, एक लड़की है सोनिया, वो छद्म वेशधारी है, ढोंगी है, धोखेबाज है। सोनिया सीम्स एन इम्पोस्टर। सीम्स इज द वर्ब हियर एंड दैट आल्सो इज नॉट द वर्ब ऑफ एक्शन। दिस वर्ब shows what the subject is or what subject seems। Now analyze the sentence। Sohan is strong। Is the verb and verb joins the subject to some word which describes it, that is strong। So in this sentence the verb is called linking verb। linking मतलब होता है जोड़ना, और verb जो is है वाक्य के सब्जेक्ट सोहन को उसके वर्णन अर्थात strong से जोड़ता है। Now we will analyze the sentence। Sonia seems an imposter। In this sentence Sonia is subject and seems is the verb, and that verb joins the subject Sonia to some word which describes the subject, that is an imposter। So we can see that seems the verb is called linking verb। और जैसा कि आपको पता है कि seems वाक्य के सब्जेक्ट सोनिया को उसके वर्णन an imposter से जोड़ता है। अब हमें पता चला कि लिंकिंग वर्ब भी होता है। अब उस लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन देखेंगे। वर्ब्स लाइक is and seem are called linking verb because they join the subject to some word which describes it। इस डिफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि verbs जैसे is और seem इत्यादि लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि वे सब्जेक्ट को उन शब्दों से जोड़ते हैं जो उसका वर्णन करते हैं। सरगुजा इंग्लिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए अंत तक, ताकि चीजें समझ में आए। यू आर वॉचिंग वीडियो ऑन linking verb। linking verbs are also called verbs of incomplete predication। और अगर हम हिंदी में इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब को verbs of incomplete predication भी कहते हैं। Repeat again। linking verbs are also called verbs of incomplete predication। आगे हम लिंकिंग verbs को और समझने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है और इसका काम क्या है। सोहन is strong and Sonia seems an imposter। The word strong and imposter, which is required to make the sense complete, is called complement of the verb। Repeat। complement of the verb। अर्थात दोनों सेंटेंस सोहन इज स्ट्रॉन्ग और सोनिया सीम्स एन इम्पोस्टर में जो शब्द स्ट्रॉन्ग और इम्पोस्टर है जो कि आवश्यक है वाक्य के भाव या सेंस के कंप्लीशन या पूर्णता के लिए, हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाता है या कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। ध्यान रखेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के बारे में हम जानेंगे कि कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट। अर्थात कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब को कम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट भी कहते हैं। सब्सक्राइब सरगुजा इंग्लिश। वर्ब के कार्य के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वर्ब के 3 कार्य होते हैं। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है ये तीसरे कार्य व्हाट सब्जेक्ट इज के रूप में कार्य करता है। सो वी कैन से दैट लिंकिंग वर्ब इज द थर्ड टाइप ऑफ यूज और वर्क ऑफ वर्ब। लिंकिंग वर्ब सामान्यतः 4 प्रकार की चीजों को बताता है। लिंकिंग वर्ब एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ 4 थिंग्स। फर्स्ट इज बीइंग, सेकंड इज बिकमिंग, थर्ड इज सीमिंग एंड द फोर्थ वन इज अपीयरिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरगुजा इंग्लिश, लाइक इट, शेयर इट and comment on the content। Look here, he is John। John became a soldier। John इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और became लिंकिंग वर्ब है और soldier कॉम्प्लीमेंट है। This complement describe the soldier John and that soldier is subject। It means complement describes the subject and this is called subject complement और यह है noun। See the next example। He is Ram Vichar Netam। Ram Vichar Netam became minister। Ram Vichar Netam here is the subject and became is linking verb, minister is the complement। This complement describes the subject Ram Vichar Netam। This is subject complement and that is noun। We are talking about minister, that is noun। Next sentence। He is a man and the man seems tired।
tired. The man seems tired में the man is subject and seems ये linking verb है और tired जो है complement है and that complement describes the subject and this complement is called subject complement and this subject complement tired is adjective. Here is a man, suppose it is you and you look happy. In this sentence you is the subject and look is the verb and that verb is linking verb. Happy is the complement. That complement describes the subject you and this subject complement happy is adjective. Now move to the another sentence. Here is a girl. She appears pleased. In this sentence, the she word is subject and appear is linking verb and pleased is complement. This complement describes the subject she and that is adjective. This is also called subject complement. See the next sentence. इस घर को किराए में देना है. This house is too late. Now analyze this sentence. This house is the subject, is the verb and too late is the complement. This complement describes the subject this house and this is adjective and this is subject complement. On the basis of all these sentences we will frame the rule. When the subject complement describes the subject it is called a subject complement. जब complement वर्णन करे subject का तो इसे कहते हैं subject complement. फिर से देखिए subject complements. Sentence राम विचार नेताम became minister और John became a soldier में subject complement minister और soldier दोनों noun है. The complement usually consists of a noun. इसी प्रकार other sentences जैसे the man seems tired, you look happy, she appears pleased और this house is too late में tired, happy, pleased, too late ये adjectives हैं. So we can say that the complement also consists of an adjective. The complement which consists of a noun is called predicative noun and the complement which consists of an adjective is called predicative adjective. Means predicative noun and adjective. अतः हम कह सकते हैं कि सामान्यतः complement शब्द noun होता है तो complement को predicative noun कहते हैं. साथ ही complement शब्द adjective भी होता है तो ऐसे complement को predicative adjective कहते हैं. There is an important notice. Verbs of sentences using linking verbs like is, seem, became, look, appear are intransitive verb. YouTube चैनल सुरगुजा इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. There are some questions for you. Fill in the blanks with linking verbs. Question is I blank tired after the long walk. इसमें खाली स्थान भरना है. इस खाली स्थान में suitable linking verb ही भरना है. Okay. Take your time and find the answer. The answer is M. I am tired after the long walk. Next sentence is he blank upset when he realized that he had lost the race. Take your time and find the suitable linking verb for this sentence. Okay, the answer is was. He was upset when he realized that he had lost the race. Next sentence is in winters the day blank dark early. Take your time, think twice and find the answer for this blank. The answer is gets. In winters, the day gets dark early. Next sentence is I blank good when the teacher praised my neat handwriting. Take full time, find the correct answer for the blank. That should be verb and linking verb. The answer is feel. I feel good when the teacher praised my neat handwriting. See the next sentence. This sweater blank so soft. पूरा समझ लीजिए, बढ़िया से सोचिए. लिंकिंग वर्ब हमको इसके यहाँ पे भरना है. The answer is. This sweater is so soft. See the next sentence. My father blank a great cook. Take your time, find the answer, find the verb for the blank and that verb should be linking verb. The answer is. My father is a great cook. Here is next sentence for you. If you practice, you may blank a champion. Take your time and find the answer for blank. What should be there? What linking verb should be there? The answer is become. If you practice, you may become a champion. See the next sentence. See blank more relaxed now. Take your time and find the answer for this blank. That should be linking verb. The answer is. She is more relaxed now. This was all about linking verb. Subscribe my YouTube channel. Thank you.